Assalamualaikum students. Today we will going to study about water. In the previous video we have already studied about air. Air is a natural resources. Now what is our second priority? Second priority of natural resources is water. You try this. You have to observe this activity at your home, or you have to do it. Okay, for purpose, for which purpose water is used and how much of water you are using it for bathing, for brushing teeth. In this chart it is given in this chart, right? Amount of water in liters, or you may write in a tub or a bucket or a glass, whatever utensil you are using it, you have to write there. For bathing, how much water you are using. For brushing teeth, how much water you are using. For washing clothes and utensil, mopping the floor, drinking, cooking, how much water you are using it. Okay, now come to the second paragraph. That is, you will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. Obviously student, it is not possible for us to spend a single day without water. हमारे घर में पानी नहीं आता तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना. We need to drink 3 to 4 liters of water every day, not 3 to 4 glass. We have to drink 3 to 4 liters, means 7 to 8 glass of water every day, so that our bodily functions run smoothly. हमारे बॉडी के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसकी वजह से हमारी किसके लिए ज़रूरी है? फॉर आर फंक्शन ऑफ द बॉडी, फॉर मेटाबॉलिज्म वाटर इज़ असेंशियल. अदर लिविंग थिंग ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ऑल्दो द amount of water they need may vary according to the size of their body. According to the size, water requirement can be vary. If the living thing or living organism is a short, okay, तो water की ज़रूरत उसको कम पड़ेंगी. If a living organism is a huge, then water must be required in a large quantity. That we see that water is very important. तो water living organism के लिए, metabolism के लिए और day to day activity के लिए water बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now read the third paragraph. If hydrogen gas burns in an air, it combines with oxygen and water is formed. हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर वो एयर में बर्न हो जाएंगी, वो डिफ्यूज़ हो जाती है एयर के साथ में, एंड उसके बाद में वो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? क्या बनेगा? वाटर बनेगा. We have learnt about some characteristic of water in the previous video. Okay, now read this orange box. In nature, water occurs in 3 states. Water does not have color, taste or odor. We have seen that water does not have any color, taste or odor. उसकी smell भी नहीं आती. Many substances readily dissolve in water. बहुत सारे substance ऐसे हैं जो easily dissolve हो जाते वाटर में. देयरफॉर वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्स सॉल्वेंट, है ना. वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर. द ब्लड ऑफ एनिमल एंड द सैप इन प्लांट कंटेन अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर. एनिमल ब्लड में भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ. वाटर इज लाइफ. इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ. वाई? बिकॉज नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. एज वाटर इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एनिमल, for plant as well. Okay, so water is called as life. Now observe this disk. Groundwater, ice and water in other forms. Seas and इतना जो ब्लू कलर का जो पार्ट है, दैट इज़ व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. सीज और ओशियन में सबसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर दिखाई दिया है. एंड दैट ग्रीन वन इज़ वाटर अवेलेबल फॉर drinking, and that red one is ground water, ice and water in other form. वाटर जो है वो दूसरे फॉर्म में मिलेगा आपको. ग्रीन जो कलर में है वो वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग है, और जो ये पूरा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, वो सीज और ओशियन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वाटर. Now read this last paragraph. We cannot use all the water on earth because sea water is salty. ऑब्वियसली स्टूडेंट, सी वाटर जो रहता है वो सॉल्टी रहता है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. सम वाटर इज़ इन फ्रोजन स्टेट. कुछ वाटर फ्रोज स्टेट में रहता. अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, येट इट इज़ इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग. उसके बावजूद भी दैट इज़ इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग. सो यू हैव टू फिल दिस पैराग्राफ और फिल दिस बॉक्स. सीज और ओशियन में 97% वाटर है. 2.7% वाटर कहाँ पे है? तो 2.7% जो वाटर है, तो
वो है ग्राउंड वाटर, दैट इज़ आइस एंड वाटर इन द फॉर्म. ओके, नाउ थर्ड इज़ वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग यू हैव टू काउंट इट. ओके, 97% में से 2.7% आप माइनस करेंगे, तो जो भी परसेंट आएंगे that is 1% or less than 1%, that is water available for drinking purpose. Okay, now move to the next page. Next page is all about uses of water on the earth. Look, this is a picture 1.6. What is it telling? Do other living thing use water like we do? क्या हम जिस तरीके से पानी को इस्तेमाल करते हैं दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करती है कि नहीं? वी यूज़ वाटर इन लार्ज क्वान्टिटी. ऑब्वियसली स्टूडेंट, हमको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज़ रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल. ऑब्वियसली वाटर साइकिल की वजह से ही वाटर रेगुलेट होता है. और वो वाटर साइकिल क्या है? द वाटर वेपर फॉर्म फ्रॉम ओशन इन द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल. रेन होती है पहले, फिर रेन का जो पानी है तो वो ज़मीन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और फिर ज़मीन उसको वाटर वेपर के फॉर्म में क्या करती है? एक्सपेल्ड आउट करती है. एंड दैट वाटर वेपर अगेन कंबाइंड विथ क्लाउड टू फॉर्म रेन, और ऐसे से वाटर साइकिल जो होती है वो फॉर्म होती है. इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन द दिस इज़ व्हाट वी कॉल वाटर साइकिल. नाउ रीड द सेकेंड पैराग्राफ. वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स. अब हमको वाटर कहाँ से मिलता है? तो हमको वाटर कहाँ से मिलेगा? स्ट्रीम से, रिवर्स से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से, लेक से, यहाँ से सबसे वाटर मिलेगा. Man also digs well and borewell to lift groundwater. Apart from this, man also constructed burns and dam of various size on rivers. Now read this yellow box. Always remember use water sparingly. मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही water use करो. Block water, let it percolate. स्टोर वाटर वेर एवर पॉसिबल. जहाँ पे स्टोर हो सकता है वहाँ पे पॉसिबल करो. वाटर को ब्लॉक करो जहाँ वो स्टोर नहीं किया जा सकता, जहाँ उसका एक्सेस में यूज़ हो रहा हो. रीयूज़ वाटर वेर एवर पॉसिबल. रिमेंबर, स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस. ओके, नाउ read this. Due to uncontrolled use of water for an increasing population, industry and farming, it is now in short supply. Obviously water का जो यूज़ हो रहा है वो अनकंट्रोल यूज़ है. कैसा है? अनकंट्रोल. क्यों अनकंट्रोल यूज़ है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. इंडस्ट्री और फार्मिंग ये सब चीज़ें बढ़ने की वजह से जो वाटर है उसका कैसा सप्लाई हो रहा है? दैट इज़ इन शॉर्ट सप्लाई. वाटर स्कार्सिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम. therefore water scarcity is there and that has become a serious issue for us. Now these are the question. What is land made of? What do you see on land? Is land flat everywhere? Does man produce soil? And these all 6 question is homework for you. You have to do it on the last page of your book, of your notebook. This now second topic is, now third and the last topic is our land, that we will going to see in next video. So students, I hope you all get my points clearly. So read it once, overlook it once, and remember it. So I hope you all get my points clearly. Okay, we have covered 2 points, that is air and water, both are natural resources. Okay, from where do we get water? How should we use it? है ना, how much quantity we are using it, how much distribution of water on the earth we have seen. So in this way we have completed water, the topic of water. So I hope you all get my points clearly. Thanks for watching and Allah Hafiz.